प्रयूष ठीक बोला फिर दोबारा? प्रयूष ऐसा है कि शुरू कर लेते हैं, मेरा ख्याल है हम टाइम पे ही कोशिश करते हैं, शुरू कर लें। तो 30 मिनट है आपके पास, आप बताइए हमें नेक्स्ट 50 इयर्स जो है वो जिंदगी और काम और टेक्नोलॉजी और हमारे साथ क्या होने वाला है। तो बाकी फिर 60 मिनट क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, हम भी शामिल होंगे उसमें। तो ओवर टू यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। Thank you so much. Thank you so much. I really appreciate and thank you, everyone. I know this is dinner time and everything, और तो आप dinner भी continue रखिएगा. लेकिन what I've done at my end is that I've prepared few slides. The reason for preparing those slides was not because to really, it is only to really help myself in order to construct a sort of a discourse in a manner, is that what are the ways in which one can potentially look at the next 50 years. And when we're looking at the next 50 years, please bear in mind that none of what I'm going to say is an absolute future. And a lot of my conversation is going to be dwindling around certain ideas. And those ideas are predominantly from everyday life experiences and also the sort of work that I do. तो उसको प्लीज गॉस्पेल ट्रूथ ना समझें, वो सिर्फ एक इम्प्रेशन अबाउट इन विच डायरेक्शन आर वी गोइंग. यूजुअली आई एम नॉट रियली गुड एट रियली शेयरिंग माय ओन प्रेजेंटेशन. अब मुझे खुद भी देख रही हूँ, मैंने कहा आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है नहीं? जी जी नजर आ रही है. यस नजर आ रही है. ओके परफेक्ट. So when you हम लोग जब कभी भी like as researchers, when we talk about a certain future, we would like to, like, you know, the frame of 50 years really helps you articulate your thinking a little better. And हम इतना abstract में नहीं बात कर रहे होते, हम basically उन्हीं aspects को हम लोग अपने impression में, अपनी understanding में लेकर आ रहे होते हैं. It has either been something from your past patterns. It is either from as a result from your current situation, and perhaps a certain decision or set of series of decisions that are being made that would have an influence in the future. So the next 50 years, if you were to count, the next 50 years would be somewhere around like 2073. आजकल का जो बच्चा है, in fact a lot of us people, like a child born today would perhaps live beyond the year 2100. So we've got to keep that horizon right now. Okay, we're not looking at this from the lens of the current generation, we're looking at this from the lens of future generations. तो आपको हमेशा वो देखना पड़ेगा कि जो भी हम अभी या मैं अभी बैठ के जो सोच रही हूँ, हो सकता है वो अगले 2 सेकंड में एक दूसरी जनरेशन के लिए एक बिल्कुल ऑब्सोलीट थॉट प्रोसेस है. So let's not. So we need to really understand our perspectives and our views about how we think about the future. Predominantly comes from our own ability to identify ourselves as to who we are, where we come from, what our experiences is going to be like. So it's rather very difficult for us to really project कि जो आने वाली नस्लें हैं, आज से कोई 10 साल बाद वाली जो नस्ल पैदा होगी, वो किस तरीके से सोचना शुरू करेगी. So at best हम अपनी जो कुछ assumptions के साथ लेके चलते हैं चीजें, वो assumptions वो उन्हीं impression से, उन्हीं experience से, उन्हीं thought of what our identities are, उन्हीं से बनती हैं. So if you really like to understand, if we move into the next 50 years and sort of understand that whatever the earthly resources we have today are still the same, and because the resources are still the same, perhaps we would require different ways of really solving our issues. So at that point in time,
आपकी global population जो है which would have crossed 10 billion. Now, if you start thinking around एक जो अगर आपने frame लेना है, population becomes I wouldn't say an easy frame, but it gives you a sense of understanding of how to start looking at the future. So at one point, demographic plays a very important role. At the other end, you've got to understand the resources also. By resources, I basically just mean the sustenance part, which could be your water, your food, your climate, your environment, the sort of conditions that. So अगर एक गरीब बच्चा है और उसके पास proper nutrients नहीं जा रही, so वो अगले जो 30 साल अपनी जिंदगी के गुजारेगा, वो उतना ही डिपेंडेंट होगा, साइकोलॉजिकली इमोशनली डिपेंडेंट होगा, साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट होगा, उसकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज वो लिमिटेड होंगी. सो आप एक दुनिया पे इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इस तरह के there are millions of children who are perhaps like that, so you can actually sort of also project the sort of population, global population that you will have out of 10 billion. So, but when we're moving in that direction, we also need to recognize the fact that जो आपका यूथ का पॉपुलेशन है, जितने मुल्क अपने आप को यंग दिखाते हैं या यंग कहते हैं, they will also be moving towards a very old an old age sort of category at the same time. तो उनके अंदर भी demographic shifts आएगा. Some of the elements, when you look at what are the important elements that are essential, कि अगर आपने अगले 50 साल के बारे में सोचना है, तो ये एक थोड़ा सा this is only to help us canvas a bit. I mean, जो social and cultural shifts होंगे, political landscape, whether would it be a landscape where people have all the rights and the freedoms in place that helps them live a very meaningful life. This sort of demographic changes. So in a country which has an aging population, in order to sustain their elderly population, what sort of policies would be required? आप उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज में चेंजेस होंगी, उनकी लाइफ, उनको जो हेल्थ केयर की नीड्स रिक्वायरमेंट्स होंगी वो चेंज होगी. सो उनका जो डिपेंडेंसी वाला पॉपुलेशन है, इफ दैट सॉर्ट ऑफ becomes dominant, so they would have to make a lot of political changes. So each of these elements are actually linked. So if I'll give you a very sort of personal example, I am a business graduate, but I graduated back in 2004. मेरी वो बिजनेस डिग्री की अब वो वैल्यू नहीं है जो कि हो सकता है 2006 में वो जो वैल्यू थी. तो अब आप देखें कि if I'm not learning as I'm growing older, and if I hold on to the same degree in hope that I would get new opportunities, that's a very old way of thinking. And so we have to understand that this aspect is only going to gain momentum. So jitna zyada aap dekhenge, those people who held on to jobs for like 30 years straight, it is no longer the sort of environment that we're living in today. अब एक बच्चे को वो डिग्री भी कर रहा है, उसको 10 से 8 स्किल सेट्स भी चाहिए, और वो स्किल सेट इतनी जल्दी ऑब्सोलीट हो रहे हैं, वो डिग्री की वैल्यू इतनी जल्दी ऑब्सोलीट हो रही है, बिकॉज द चेंजेस दैट आर हैपनिंग एट द इंडस्ट्रियल लेवल आर सो फास्ट पेस because of the technological advancements that are taking place. That child, in order to keep abreast, not only has to have a social sciences understanding, but also needs to understand how artificial intelligence is going to be plugged into his line of thinking and his line of work. तो जब आप इस तरह के developments देख रहे होते हैं, then you also realize कि space exploration is becoming a thing now. And why is it becoming a thing? When you've got 10 billion people, much of whom you've got to feed, provide water, provide access. So maybe space mining is going to be something which a lot of, like, China is looking into it, Russia is looking into it, next door neighbor, India is also thinking along those lines. I mean, what to speak of the Western economies that are already doing this, but there are economies who are now looking at कि अगर
कुछ लोग जो हैं, मुल्क जो हैं, वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, कुछ लोग उसको बिल्कुल नेशनल सेंट्रिक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. सो अगर आपकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जाएगी, सो हाउ विल यू बी एबल टू सस्टेन देम, हाउ विल यू बी एबल टू मेक डिसीजंस फॉर देम, एंड हेंस व्हिच इज व्हाई sustainability as a concept is gaining momentum. Now this concept as a whole was first introduced in 1960s by Club of Rome. तो आप देखें, एक कॉन्सेप्ट को जो 1960s में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो अब जाके in the last 8 to 10 years it is gaining traction, it is gaining momentum, because perhaps the sort of changes and what had allowed things to happen the way they were, it was okay for us to keep living that way. But if we are to anticipate that there are going to be 10 billion people, then the situation dramatically changes in our capability of how we're thinking about the coming generations. So one of the elements which I find quite interesting in terms of how technology is evolving is, so I'm assuming each one of us sitting today has a smartphone. So that's my number one assumption, that each one of us has a smartphone. So each one of us is also connected to the internet. So अगर हम कोई 34 लोग हैं, तो हम 34 लोग जो हैं connected नहीं है, and this is because of okay. So जो इतने लोग भी हैं, वो connected भी हैं. So what conscious technology therefore really implies is that how technologies would understand us fully enough that they basically it's integrated within us. जो इंटीग्रेशन वाली बात है, वो ये इसको इस नजर से भी देखें कि अगर हम लोगों ने ऐनक लगाई हुई है, तो एक जमाने में ये भी टेक्नोलॉजी थी, तो हमने अपनी साइट को ऑगमेंट करने के लिए, बेहतर करने के लिए, ताकि हमें विजुअली चीजें साफ नजर आएं, तो हमने ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लिया है. उसी तरीके से हम कुछ लोग घड़ियां भी पहनते हैं, वो टेक्नोलॉजी हम इसीलिए पहनते हैं बिकॉज वी वांट टू कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम. So there was a point in time when there weren't any watch. So as and how technology gets invented, and as and how it sort of really gets plugged into our needs, it starts to learn. So the conscious technology part in all of this is how different technologies are going to really get assimilated in order to form. So isme jo the technologies that are important is अब जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, आप इसको ये इस नजर से देखें कि व्हाट इफ दिस टेक्नोलॉजी ऑल ऑफ इट इज एक्चुअली इन अ palm of your hand. अगर आपके palm में है, so imagine करें कि if there are contact lenses now being made which actually helps you, gives you the internet of things, but gives you internet of everything. So as you moving into your reality, you can also see the augmented nature of your environment. So वो technology जो है, it is being built. So अब आप ये सोचें, ये सारी चीजें जब synergy में आती हैं, तो it makes a much more complex future. It makes a very difficult, it's for a human capability to really understand the complexity of it and the magnitude of it. It requires a great degree of thoughtfulness, a great degree of understanding, a lot more empathy. We cannot be understanding these things in connaissance of them being us versus them. You've got to understand as and how generations sort of progress, ये उनके लिए बहुत नॉर्मल चीज होगी. जैसे अब आज हमारे लिए स्मार्टफोन रखना बहुत नॉर्मल चीज है, हमारे लिए चैट जीपीटी रखना बहुत नॉर्मल चीज है, और उसको अप्लाई करना बहुत नॉर्मल चीज होता जा रहा है, या अपने टेलीविजन सेट पे इंटरनेट एक्सेस के जरिए मल्टीपल OTT प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम एक्सपीरियंस करते हैं विजुअल मीडिया. वो हमारे लिए नॉर्मलाइज होता जा रहा है vis-a-vis as compared to growing up. We only knew के 9 बजे PTV पे खबरनामा आता था, वो एक खबरनामा होता था. 7-8 बजे एक शो हो जाता था, 8 से 9 बजे एक शो हो जाता था.
अब imagine करें the proliferation of all of that, and if you think right now it is noisy, just sort of imagine when all of this for the newer generation, it's going to be very normal. It's going to be very normal for them to have augmented reality embedded in their contact lenses. It's going to be very normal for them to have a brain interface chip. All these technologies are actually now advancing at a stage and in a pace where ये सारी integrate होंगी आपकी human anatomy के साथ साथ. So अब आपको उस complexity में रहते हुए, you've got to have a very clear idea of where things are moving. And why did I take demographics as a route to it? Is because demographics helps you understand what are the current structure and the composition of the society we're living in today. कि अगर आज दुनिया young है, तो 50 साल के अंदर अंदर वो बूढ़ी भी होती जाएगी. जब वो बूढ़ी होती जाएगी तो उसकी नीड्स भी चेंज होंगी. So as I moved from one decade to the next, it was easier for me to function in a way कि जिस तरह मैं 20s में function कर रही थी, अब मैं 40s में उस तरीके से function नहीं कर सकती. So the level of energy that I may have had in my 20s is not the same energy that I have today. When I move into my 50s, it's going to be even less so then. And at that point in time, as I've got to be very mindful as to how am I spending my energy, where am I spending that energy. तो वो जो mindfulness है, वो आपने देखना है कि क्या society में ये चीज जो है translate हो रही है younger generation में या नहीं हो रही. It is going to be a very important indicator to understand how younger generation is going to be making choices, identifying their preferences. So the 50 years to give you a very different view कि एक इंसान के उसमें क्या changes हो सकती है ना. एक तो आपने दे दिया एक तो very broad understanding कि जी cultural and political shifts आ सकते हैं, demographic change हो सकता है, but what else is happening in essence? You will be living longer, you will be more health aware, there will be changes in fertility rates. Right now, we have those changes happening in the Scandinavian country, but perhaps there is going to be a new technology, more different technology that is coming into being, that can help you in that reproduction. Aapki physical, there are some research which is kind of speculative, but there is research happening that perhaps aapki jo physical aspects hai, which is perhaps if you look at the human brain, maybe the size of the brain may change, but that doesn't mean the level of intelligence or the intellect is also changes. But the size may change. Perhaps we'll be a little more taller. So there are all these speculative ideas about how the physical existence of human beings will also change. There is also literature around कि हम aggressive कम होंगे. अब based अगर हम aggressive कम होंगे and will be more friendly towards it, it sort of also needs to be understood in the context of perhaps हमारे पास लड़ने के लिए जो हम resources के पीछे लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते हैं, maybe that behavior will no longer be required. Why would that behavior will no longer be required? The coming generation would have grown up with a very different sort of condition altogether. Now, unke liye access to information, access to different countries. Now, where they cannot afford a very expensive 5-star hotel, they can still mobilize themselves at a very cheaper rate and have that experience. So, अगर आप उस तरीके से behavior को भी identify करें, तो आपको अपने मुल्क में भी ये थोड़ा बहुत नजर आएगा कि पिछली हुकूमत में, and not so in the last 12 months or so, but पिछली हुकूमत में many young people were traveling all across Pakistan. They were documenting their experiences. Girls were able to do this. Girls and boys together were able to do this. That was the sort of indicator that I had not personally experienced as much. So the frequency and the level of how people were really creating their own experiences was also changing in the country. So agar aap usko us angle se dekhen, to perhaps
जो मोर फोकस की चीज है कि जी हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो कि इतना ऑटोमेट हो जाएगा with the integration of technology and everything, तो हो सकता है कि decision making के लिए what is more important is how creative you are and how imaginative you are. So creativity becomes a very important aspect in terms of your thinking, in terms of your approach, in terms of how you solve problems. तो उसमें अगर आप human centric understanding के ऊपर चलें, तो at an individual level, at a societal level, these changes are happening. What your society was back in the 40s and the 50s is no longer the case today. You cannot draw comparison of how similar they are or how different they are. It was a different time with different conditions, with different set of priorities. Today is a very different time with different technologies and very different set of priorities. तो अगर हम पाकिस्तान को देखें, that was more of like a landscape giving you a view. अगर हम पाकिस्तान को देखें तो like in today, in about 50 years, we're more than 400 million. हमारी life expectancy today is somewhere around 66 or something like that. In 50 years हमने कोई ज़्यादा remarkable नहीं किया अपने health care में, तो जो linear projection बोलती हैं वो 73 है. So infant mortality rate, it's basically per thousand live birth पे कितनी deaths होती हैं, तो उधर भी कोई इतना remarkable change नहीं है. It's 16.98. Median age today, as we stand today, is 20. In 50 years, it's going to cross 30. So already you will have a bulk of population who will perhaps be looking for work, would need work, would need to feed their families, would need to actually take care of a lot of things that perhaps we're not even thinking along those lines. But the reason for setting certain linear projection is just to give you an understanding that how do advanced economies really think about the future? They don't think about on whims. They don't think about KG, मैं सुबह उठी हूँ मेरा ये दिल कर रहा है. When they're looking at their population, when they're looking at their people, they're looking at it in terms of 100-year horizon. So 50-year horizon is basically 100-year horizon which is well planned, well constructed. That level of stability and certainty can only come from if you have truly understood where you are today. But if you've not really understood where you are today, you are going to be motivated and convinced by perceptions and opinions that flood our thinking. So it is more like कि मेरी wishful thinking है कि पाकिस्तान कल इस तरह सोचना शुरू कर दी. ये मेरी wishful thinking है. What are the necessary requisites that are required in order to make that happen? That requires another level of thinking altogether. That requires a thinking where you have to decide for a fact कि जी हमने अगले 100 साल रहना है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं रहेंगे जिस तरह के आज रह रहे हैं. So अगर हमने ये डिसाइड करते हैं कि हम इस तरीके से नहीं रहेंगे जिस तरह आज रहते हैं, फिर आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए अपने दिमाग में कि भाई हम किस तरह के होंगे. So it's almost similar like, imagine like you want to go into engineering because you want to become an engineer. So it's so clear because there's an opportunity for engineers. So what is the opportunity to be a Pakistani, remain a Pakistani in the next 100 years comes from the leadership. और वो leadership कहीं भी हो सकती, जरूरी नहीं है कि एक political clout में आप ढूंढे, एक छोटे से school में भी वो एक leadership आपको नजर आती है. So that idea and that thinking, one may assume that it's quite radical. It is not, because a lot of countries are not just working on centuries per se, they're working on millennia. And when you're working on millennia, you've got 1,000 years to really look ahead. And so imagine if you were to look ahead into 1,000 years, you've got to be really certain about few things. पानी साफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, खाने की क्या चीज ऐसी होगी, क्या हमने लैब ग्रोन मीट अपनी सोसाइटी में, अपने कल्चर में इंट्रोड्यूस कराना है या नहीं कराना. To what degree will it really influence our religious way of thinking? So you've got to really have those conversations today if you are to really look into your future in the next 100 years.
If you're not going to have those conversations, this becomes very irrelevant, by the way. So very quickly, just to give you a snapshot कि एक long view में आप किस तरीके से सोचते हैं, तो ये सिर्फ 100 years का है कि आपने 1950 से the year 2000 आपने 100 million population add कर लेते हैं, 50 साल के अंदर अंदर आप 200 million add कर लेते हैं, and then it gives you a breakdown of के अगले उससे 50 साल में आप 59 करेंगे, फिर आप 66 करेंगे. By the time the year is 2300, you are only adding 16 million. These are very linear projections. These are not to say that the geopolitical circumstances are not going to change. This is not to say your other, perhaps you will never have a leadership that would have the capacity or the aptitude to think along those lines. So those are the sort of areas where we can say कि अगर इस तरह का कुछ होता है, वो आप assumption लगा सकते हैं कि if you get a leadership that has the capability and the foresight to think along those lines, then you will see a lot of things moving in a very different direction. But if you think, if the current understanding of your situation is that everything is the same and not much has changed, then let's assume that not much will change in the next 50 years. And the perception largely is going to be everything is going to be the same. And therefore, the sense of hopelessness and despondency comes from that vision of really moving into a dark alley with no light, and with whatever little torch you can bear through your own narratives and your own conversation is a very different idea altogether. So this is in a very nutshell. I presented this मेरे ख्याल में से 2016 में ये कुछ. So how do you create a long view? This is a very brief footnote, basically. It's not even something which it can be rethought, recalibrated. It can also be used as maybe this is not the way, it should be another way. But you should always be thinking what is another way. But there has to be, in terms of decision making, in terms of your approaches to how you create choices, there has to be some cohesive understanding for a population of over 400 million in the next 50 years. And thank you so much. जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच. अच्छा, मैं सवाल जब तक कोई और नहीं हैंड रेज करता तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, कि जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं फ्यूचर में वो किस तरह के इवॉल्व होते देखती हैं आप? वो जो लिबरल डेमोक्रेसी जिससे हम फेमिलियर हैं, जो हमारे यहाँ तो खैर वो भी नहीं आई, तो वो भी अभी मतलब जो आपके सामने है सिचुएशन, तो किस तरह का जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो इमर्ज करेगा फ्यूचर में? और वेस्ट में भी ये लिबरल डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक, यू आर फेमिलियर विद दैट, तो क्या देखती हैं आप फ्यूचर? Well, I mean, you see, we need to understand a certain form or an instrument of governance and management tools जो होते हैं, वो it was a management tool. So अगर आप liberal democracy को भी देखें, so it was a management tool that actually helped the values within the society as a reflection. So वो ये ऐसा टूल नहीं था कि उन्होंने खुद से सोचा जी ये पॉलिटिकल एलीट ने कि जी हमें इस तरीके का होना चाहिए. वो आपकी सोसाइटी से ही विदिन द सोसाइटी से इमर्ज हुआ, एंड इट वाज यूज्ड एज अ टूल टू मैनेज द सोसाइटी and as a way to now if it's coming under attack, it's coming under attack because there are other ways of managing societies. Now the reason for it being so कि जो Chinese way of governance है is dramatically different from the American way of governance. So how things evolve and to what degree are they successful? I mean, it's for any intelligentsia to decide कि अगर मैंने इस किसी चीज को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके ऊपर इट हैज टू बी. तो जो बाहर के लोग हैं उन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी को जिस हद तक वो सक्सेसफुल बना सके वो बनाया है. उन्होंने उसको यूज भी किया है टू इन्फ्लुएंस
other economies in the world also, which is one of the reason why you have so many. I'm assuming कि आप लोग fast food chains भी जाते हैं. So there is a reason why you have McDonald's in this country. There is a reason why you have Pizza Hut in this, KFC in this country, और अभी भी Papa John's in this country. मतलब you have to understand कि the reason why your society has been able to do all of those things also, and the reason where bulk of your business graduates and otherwise have been employed is because of the instrument of liberal democracy that was used. ठीक, थैंक यू. अच्छा, शुमाइला और फिर डॉक्टर शाजिया और फिर साजिद अली और फिर रुबीना. जी जी शुमाइला. अच्छा, मेरा सवाल ये है कि चूंकि इतनी सारी चेंजेस आएंगी, तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो इखलाकियात हैं वो कहाँ पे ऊपर जाएंगे या मजीद नीचे? आप उससे क्या अज्यूम करती हैं? हमारे से मुराद क्या है आपका? लाइक हमारे से मुराद हमारा तो पाकिस्तानी. अच्छा अच्छा, वो एक बहुत ही मतलब मेरी कभी कभार इसके ऊपर होती है, बिकॉज आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ वैल्यूज, बट आई डू लुक एट वैल्यूज दैट वे. So one of the study that I did was on trust, because I wanted to really understand what makes people trust certain sources of information. तो मेरे ख्याल में से जो वैल्यू जो आप हमारी सोसाइटी में जो के है ऑलरेडी, which is I find us to be evasive, dishonest, and not upfront with what we want and how we want it. It's because we don't really have a clear idea. We feel that we will be belittled if we would clearly say, this is what I want. So we're pretty much, what I'm trying to say, we're pretty much dishonest in our ways, in our thinking. तो अब आप इससे अंदाजा लगा लें, अगर हम समझते हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है और पाकिस्तान में जो हमारा एवरेज सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उधर झूठ नहीं है, then maybe I am pretty much misinformed. आप नॉर्मल मुल्कों में, नॉर्मल से मुराद है कि जिधर इतना ज्यादा आपको केओस फील नहीं होता, आपका एवरेज जो वेस्टर्नर है वो झूठ नहीं बोलता, उसको समझ नहीं आती, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. हमारा बहुत ही एवरेज जो होगा, एवरेज जो इज गोइंग टू बी लाइंग, इफ नॉट लाइंग इज नॉट गोइंग टू बी अपफ्रंट, बट दिस इज अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस. एंड आप इसको देख लें कि जो उम्मीद जहां पर है कि जो हमारी आने वाली नस्ल है, जो या अभी जो हमसे 2-3 decades जो है छोटी है, when I look at them, that's where my umeed is, because they will call you out on your bullshit. They will not care. तो उनका जो वैल्यू का प्रोपोजिशन है ना, वो उस तरीके से वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे जिस तरीके से हम इमेजिन करते. तो वो बता देते हैं कि ये सही बात नहीं है, ये गलत बात है, सच्ची बात बोल देंगे. अब वो सच्ची बात जब बोलेंगे तो वो फिर आपके पास बड़ा जिगरा होना चाहिए टू रियली हियर देम आउट. अच्छा परूष, ये जो आपकी ऑब्जर्वेशंस है ना, इससे मैं एग्री करता हूँ, आपने ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये बता सकते हैं इसकी वजह क्या है? मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद अस? I don't think there's anything wrong with us. I think we have. I don't think there's anything. Well, honestly speaking, I don't think there's anything wrong with us. ये देखिए, ये मैं पहली दफा आपका ये चीज अटेंड कर रही हूँ. हमें जरा खुल के बात करने की जरूरत है. आई थिंक हमें बिल्कुल, मैं इसीलिए तो मैं ये आपको सवाल कर रहा हूँ कि रीजन पे भी जाए ना, वजह क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है. ये बात मुझे लगता है कि मैं आपको बताती हूँ. मैं एक ऐड करता हूँ, छोटी सी बात. मैंने ये देखा है कि हम इंशाल्लाह का इस्तेमाल भी बड़ा यूफेमिस्टिकली करते हैं कि भाई इंशाल्लाह. अच्छा, ये बड़ा आसानी देता है ना कमिटमेंट. बाज लोग करते होंगे पॉजिटिवली, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इसको इसलिए करती है कि ठीक है, ये अच्छा एक डिफेंस है. अब आप बात कीजिए. मैं यही सोच रही थी जब आपने कहा ना कि लाइक इसकी क्या वजह हो सकती है, मैं वजह के ऊपर जा रही थी. एक तो ये है ना कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा होता है कि जो आपको सप्रेस करता है.
आपके एक्सप्रेशन से आपको एलियनेट करता है, ठीक है। जब आपका एक्सप्रेशन से आपको एलियनेट किया जाएगा तो आप में एक नेचुरल रिजेंटमेंट आएगी, आप में एलिमेंट ऑफ फेयर आएगा, आप अपने आप को बेहतर जबान नहीं इस्तेमाल कर सकते, बेहतर पेंटर नहीं बन सकते, बेहतर वो आप अपने आप को बहुत ही एक आप अपने आप को आप अपनी सोच को कैद में सोचें। एक तो फिजिकल कैद होती है और आप अपनी सोच को कैद में सोचें, और फिर आप जब वो कैद हो जाती है फिर आप वो सफोकेशन इमेजिन करें जिस सफोकेशन से गुजरती है सोसाइटी। नहीं, हमें इमेजिन करने की शायद जरूरत नहीं है, मतलब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। So see, I mean, now sort of क्या जब आपको मौका दिया जाएगा या आपको नजर आएगा कि ये अभी मौका है, क्या इसमें आप अपने आप को वॉइस आउट करेंगे या आप डर के बैठ जाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो छोटा सा मौका देके, कभी कभार हम सोचते हैं ना कि लाइक ये डिसिडेंट्स हैं, ये इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं, वो देख रहे होते हैं, उनको वो एक मौका मिलता है जिसके ऊपर वो अपने आप को एक्सप्रेस करना, उनको लगता है कि आज मेरी सुनी जाएगी या आज मुझे समझा जाएगा। So if you are not allowed to express, then वो ट्रस्ट के इश्यूज भी होंगे, हर चीज के इश्यूज होंगे। आप अपनी सोसाइटी को, आई मीन अ सोसाइटी ऑफ अनवेल, अनहेल्दी, डीजेनरेट कर रहे हैं। जो लोग अवेयर है उनके साथ नहीं, जो आने वाले नस्लें, फिर उनको आप बना रहे होते हैं इस तरह। ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच जी। शाजिया जी सर, आप लोगों को क्लियरली मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, थैंक यू परुष। आप स्ट्रेस थोड़ी हैं, आपकी आवाज कोई दबाई हुई थोड़ी है। सर वो दबाना भी मुश्किल है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी प्रेजेंटेशन के लिए और टॉक के लिए। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो बड़ा टेक्नोलॉजी ऑप्टिमिस्ट होता है ना, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने एक बच्चों का कार्टून वो देखा था, वॉली नाम था उसका। इट वॉज अबाउट, उसमें भी इंसानों के फ्यूचर के बारे में ही बात थी, और उसमें एक स्पेसशिप थी जिसमें जो लोग दिखाए गए ह्यूमंस हैं वो अब स्पेस में चले गए, स्पेसशिप है उसी में रहते हैं, दे डू नॉट मूव लॉट। तो वो सारे अपनी कुर्सियों पे आराम से लेटे हैं, बड़े मोटे मोटे सारे हो चुके हैं, फिजिकल मूवमेंट बड़ी मुश्किल है। तो वो एक बड़ा डिप्रेसिव एक व्यू है। लेकिन अगर हम इसमें ना क्राइसिस की बात ना करें कि फ्यूचर के क्या क्राइसिस हैं, पर्टिकुलरली इन द पर्सपेक्टिव ऑफ जो आपका पहला पॉइंट था कि पॉपुलेशन ग्रोथ जिस तरह से है, तो फूड स्कार्सिटी और वाटर स्कार्सिटी पाकिस्तान में अगर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे और अगर हम नहीं देखेंगे कि फ्यूचर में वो बहुत रियल एक इशू है हम, तो शायद हम वो जो जितना भी फ्यूचर अभी हम देख रहे हैं वो फ्यूचर हो गई, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है हमारा फूड स्कार्सिटी का। पानी नहीं है, फूड नहीं है। आप देखें अभी सेंसस में 25 करोड़ आबादी आई है, और मुझे लगता है ये भी कम, हम इससे भी 3 करोड़ तो ऊपर होंगे जरूर। वो सब काउंट ही नहीं हुए, क्योंकि मेरी अपनी मेड्स जो काम करती हैं, बहुत सारे लोगों की इधर शनाख्ती कार्ड ही नहीं है, पूरी पूरी फैमिली इधर शनाख्ती कार्ड नहीं है। सो एक इशू ये है कि हम तो शायद मेजर भी सही नहीं कर रहे पॉपुलेशन पे, फूड का इशू है, फिर हमारा क्लाइमेट का बहुत बड़ा इशू। आई गेस आपका वो लास्ट पॉइंट था जो शायद टाइम की स्कार्सिटी की वजह से आप डिस्कस नहीं कर सकी, लेकिन क्लाइमेट का जो इफेक्ट हमारे ऊपर आ रहा है, हर साल के फ्लड्स हैं, मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए तो मुश्किलात ज्यादा नजर आती हैं। आपने कहा कि ऑल्दो आई नो आपका एक, आपने शुरू में कह दिया कि ये कोई ऐसा थोड़ी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन एक प्रोजेक्शन है। लेकिन अगर लाइफ स्पैन बढ़ते हुआ तो मुझे कम नजर आता है। मुझे तो लगता है जो पहले लोगों का सर्वाइवल बहुत मुश्किल नजर आता है। और जो अभी आप ट्रस्ट की बात कर रही थी ना, ट्रस्ट, क्योंकि मेरी सारी स्टडी इज अराउंड वैल्यूज और एथिक्स का है, तो जहाँ पे जब रिसोर्सेज की कमी होती है ना, रिसोर्स स्कार्सिटी होती है, तो लोगों की एक दूसरे के साथ जंगी होती है, फिर कोई किसी को ट्रस्ट नहीं करता। तो शायद एक हमारा बहुत बड़ा मसला जो शुरू से रहा है वो रिसोर्स स्कार्सिटी का रहा है, जहाँ हम सबको पता है ना, हम सबको इक्वली चीजें डिवाइड हो जाएंगी, मिल जाएंगी, हम सब एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो कि हम में से कोई एक दूसरे की चीजें छीनने की कोशिश नहीं कर रहा। तो आई गेस एक बहुत, ये फ्यूचर में जो इश्यूज है ना ये हमारे बढ़ेंगे। दो चीजों को मैं सिर्फ आपसे पूछूंगी, फूड का क्राइसिस और जो एनवायरमेंट का इफेक्ट है। एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस एक चाइनीज इन्फ्लुएंस भी आ रहा है, उसे चले हम इग्नोर कर देते हैं, वो शायद कोई और आगे सवाल कर ले। इन दो चीजों को फिर आप कैसे देखते हैं?
Thank you so much. No, I agree with you. I mean, there are a multitude of crises. I mean, it just sort of depends on what do you want to pick and choose, right? एक किसी भी क्राइसिस के ऊपर आपने अगर परसेप्शन किसी का बनाना है, उसको वेटेज अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कितना देना है, दैट इज इम्पोर्टेंट. उसके ऊपर आपका डेटा कितना मीनिंगफुली आपने गैदर किया, दैट इज इम्पोर्टेंट. Not behaving like a complete absolute ignorant when you know floods are an occurrence and it is not the first time it's occurring. So it means that if they had occurred back in 2010 और फिर दोबारा उसी तरीके से, तो इसका मतलब है कि चलो ठीक है, ये चीज आ सकती है बार बार. तो इसमें crisis can only be that way if you are ignoring the signs and the patterns. And it doesn't take a genius to really understand the sign nor the pattern. अब उसके लिए अगर जीनियस की जरूरत नहीं है और उसके लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है. तो वाटर क्राइसिस, फूड क्राइसिस, अभी एक छोटी सी एग्जांपल मेरे पास पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी कि यूएस में एफडीए ने अप्रूव किया है लैब ग्रोन मीट को सेल आउट करना कमर्शियली. सो अब फूड क्राइसिस अगर उस तरीके से इमेजिन करें आप कि जी अभी भी हम ट्रेडिशनल थॉट के ऊपर जा रहे हैं, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रहे हैं, तो फूड क्राइसिस का भी एंटीडोट है, साफ पानी का भी एंटीडोट है. तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल ना हो. जो अभी जिस चीज का हमें हल तलाश करने की जरूरत है वो ये है कि व्हाई आर वी रिएक्टिंग टू द सेम इशू द सेम वे. Why isn't our reaction not changing? Why isn't our approach towards how we think about our issues not changing? So there is a genuine disconnect in our learning. हम कहीं ना कहीं कुछ नहीं सीख रहे. So वो जरा पता करने की जरूरत, या हम बहुत लेजी हैं. Honestly speaking, I think जो दूसरा हमारा मसला है, हम लेजी बहुत हैं, हम नहीं मेहनत करना चाहते. मेहनत नहीं करना चाहते. दूसरा ये जो आपका भी लैब ग्रोन मीट की एग्जांपल है ना, इसमें हमारे और बहुत सारे इश्यूज खड़े हो जाते हैं, वो आपको भी अच्छी तरह पता है. तो मैं वही आपको बोल रही हूँ ना कि लाइक ठीक है, आप उसे डिस्कस करें ना, हैश आउट करें. या तो बच्चों का एक पैनल पे बैठी हुई थी, बड़ा एजुकेशन लगे हुए थे, एंड आई हैड जस्ट रेड वन रिसर्च रिपोर्ट जिसके ऊपर कह रहे थे कि योर 40% ऑफ योर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 आर malnourished. So what education are you talking about? You want to have dumb kids? Is that what you want? Dependent population, is that what you want? So ये तो मतलब these are matter of choices कि आपने कहाँ value proposition, किस एंगल को आपने वेटेज देना है, और वो एंगल जो है वो डोमिनेट हो जाएगा. अगर हमारे यहाँ मैकडॉनल्ड्स की ऐसी ये सारी, आप ये कहाँ बनते हैं? ये फैक्ट्रीज में तो बनते हैं. आपको क्या पता क्या साइंस लगी है, क्या लगा, लेकिन हमारे यहाँ खा रहे. अब आप वो जिस डिस्कोर्स की आप बात कर रही हैं, उसके ऊपर डिबेट करना वो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है. जब खाना नहीं होगा ना, तो ये सारी डिबेट गोज आउट ऑफ द विंडो. जब पानी नहीं मिलेगा, ये डिबेट सारी बाहर जाती है. जी सज्जाद अली. Yes, sir. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. Sir, am I audible? जी आवाज आ रही. Hello. हेलो जी, आवाज आ रही. Sir, am I audible? Yes. जी आवाज आ रही है. Okay, sir. Okay, sir. We are continuously discussing. Yes, sir. Sir, we are continuously discussing the political situation of the Pakistan and crisis that we will face in future about the food. I just wanted to know that are you looking at the situation of technology in the Pakistan? There is nowadays we are facing the you can say that boom of technology in the nature of Pakistan in technology, because nowadays whenever we are look at our neighbor country India, they are the CEO of different companies that are working on the different platforms. Hello.
जी Puruesh, you got the question? I'm assuming. Sajjad, you must have joined the presentation very later on. Am I correct? Yes, yes. I just Okay. wanted to sorry for that before the No, question. that's fine. That's fine. I just wanted to understand what didn't you hear so that I'm able to respond. I just joined the meeting after 15 to 20 minutes also. So बस सही that is है, why इस I am वक्त feeling sorry वो for it. हाँ बस सही है, दैट्स नॉट एन इशू। वो इस वक्त तक अगर अभी आप शाजिया साहिबा का अगर सवाल सुनते तो उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत ही टेक सैवी यूटोपियन व्यू दिया है अबाउट द फ्यूचर, बट क्लियरली आई हैव नॉट बीन एबल टू कन्विंस यू। अगर मुझे ब्रीफली आपका सवाल समझ में आया, ये है कि लाइक we're not really discussing the political landscape of the country. Briefly, I am just asking you, what is the future of technology in Pakistan? Oh, I think it's a very bright future. You have all the young people, all the universities now beginning to realize कि ये integrate होना चाहिए छठी जमात से। छठी जमात से बच्चे को कोडिंग आनी चाहिए, at least language of the computer आनी चाहिए। So जिस तरह हमें उर्दू जबान सिखाई जा रही है, उसी तरह हमें कंप्यूटर की जबान भी आनी चाहिए। So this is just to say that the level of seriousness is there, and sometimes it is reflective within our own construct. However, we don't really build that into our discourse. So very briefly, I think in terms of tech, we are serious at a political level, we are serious at an economic level. As a society, we are serious. मैं आपसे अगर आपका फोन ले लूं तो फिर मैं पूछती हूँ कि आपके कैसे दिन गुजरेंगे, ठीक है ना? आपका एक्सेस अभी सारों का ले लेती हूँ, so like फिर then I'll check with you in about like 2 hours how did you spend your time. सबका ले ले तो ठीक है। फिर कोई इशू नहीं है। चले, थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर रुबीना, अगर मैंने कोई तरतीब गड़बड़ कर दी हो तो आप सॉरी जी। डॉक्टर रुबीना। Assalamu alaikum, sir, and assalamu alaikum, everyone. Puruesh Chaudhary, thank you very much, and assalamu alaikum as well. मैं आपकी बात को ना मैं वहां से स्टार्ट करूंगी जहां से मैडम शाजिया ने जो क्वेश्चन रेज किया था ना, सरकासिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात की थी। तो मैं देख रही थी कि प्रेजेंटेशन में और बाकी डिस्कशन के अंदर एक चीज जो मुझे लग रहा है कि जिसको बिल्कुल टच नहीं किया गया, when we are talking about the projection of next 50 years, and that is when on one side there is a scarcity of resources, on the other side the world in general and Pakistan के context में या अपने region के context में हम देखें in particular, तो उसमें देखें कि हमारे जो resources हैं वो तो already depleting resources है, scarcity of resources है, over population है, और दूसरी तरफ जो टेक्नोलॉजी का यूज है वो हमारे वेपनाइजेशन की तरफ और आर्म्स रेस की तरफ बहुत ज्यादा चला गया है। तो हम लोगों वाले जो ये रीजन है, ये जो अगर आप साउथ एशिया की बात कर लें या ओवरऑल दुनिया में देख लें, तो ये जो ऑलरेडी स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, ये जब जा रही है टेक्नोलॉजी में वेपनाइजेशन की तरफ और आर्म्स रेस की तरफ, तो उस सूरत में आपको क्या नजर आ रहा है कि आगे होने क्या जा रहा है नेक्स्ट 50 इयर्स में? हम कहाँ खड़े होंगे और हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो इतनी सारी पॉपुलेशन को कैसे मैनेज करेंगे? ऑलरेडी वी आर वाचिंग सो मेनी और एक्सपीरियंसिंग सो मेनी क्राइसिस। वो बिल्कुल मैडम शाजी की बात से मैं एग्री करूंगी कि बहुत ज्यादा क्राइसिस हमें तो फ्यूचर के लिए नजर आ रहे हैं, कोई खास अच्छी वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं। तो इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगी आप? अच्छा परुष, मुझे एक जुमला कहने दें। हम वहीं खड़े होंगे जहां हम चाहेंगे हमने खड़े होना है। हमें पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि हमने कहाँ खड़े होना है, यही तो प्रॉब्लम है। वी हैव नॉट येट आइडेंटिफाइड। और मैडम ने वो बड़ी अच्छी बात की है कि जी लोग तो जो हैं और जो नेशंस हैं वो मिलेनिया की प्लानिंग की बात करें, वी हैव नॉट इवन प्लान फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। तो हमारी तो प्लानिंग ही नहीं है, तो इतनी बड़ी जो हमारी ये पॉपुलेशन है इधर की, ये किधर जाएगी? तो फिर सवाल का जवाब तो आपको खुद पता है डॉक्टर रुबीना, पूछे अभी भी परुष। पता तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट वो जब जा रही है और रिसोर्सेज जा रहे हैं, तो आपकी क्या प्रोजेक्शन है उसमें? ठीक है, फिर जवाब जी बताइए। मैं सिर्फ एकदम ब्रीफली ये करूं, एक चीज कहूंगी कि इस वक्त ना एक जो इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है, बट इट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, सो वी गॉट टू अंडरस्टैंड वेयर इज दिस कॉन्सेप्ट कमिंग फ्रॉम आल्सो। तो जो और ये स्केर्सिटी में कॉन्सेप्ट वहीं से आया है, ठीक है? तो वो हमें ये जरा ये इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी देखना है।
हमारे हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजियसली स्पीकिंग ऑल्सो, हमारे यहाँ बहुत शेयरिंग का एटीट्यूड इनकलकेट किया गया हुआ है। ये कंपटीशन का एटीट्यूड तो ये आपको सर्टेन पॉलिटिकल थ्योरीज, बिजनेस स्ट्रेटजीज, वो तो वहां पर सीखने को मिलती है ना। तो competing for resources is what actually inculcated the thought for scarcity. और अगर हम इसका थोड़ा सा फ्लिप साइड देखें, तो अभी जो नया कॉन्सेप्ट जो इमर्ज हो रहा है और उसके ऊपर बहुत एग्रेसिवली वेस्ट में तो काफी काम हो रहा है उसके ऊपर, इज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अबंडेंस। कि अगर आपका मैं पैराडाइम, आपका जो सोचने का तरीका है वो स्केर्सिटी से शिफ्ट कर दूं अबंडेंस की तरफ, तो आपको लगेगा कि आपका सवाल करने का तरीकेकार, आपका सोचने का तरीकेकार बहुत मुख्तलिफ हो जाएगा। फिर मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज होगी, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज वो होगी, क्या डॉक्टर रुबीना के घर में साफ पानी आता है या नहीं आता। सो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। पानी होगा नहीं होगा वो बहुत इररेलेवेंट चीजें होती रहेगी, बिकॉज द आइडिया इज के एट द एंड ऑफ द डे, if a crisis happen, we will collaborate, we will solve the issue. But sometimes we need to understand that some crises need to be avoidable. I mean they can be prevented, and that prevention requires कि आपके पास anticipation capabilities अच्छी हो, आपके पास sufficient data हो, sufficient social और human intelligence हो, आपके पास intellectual capital हो। ये सारी चीजें जो है हमारे पास हैं। सो जो आपको जो डार्क लग रहा है, मुझे तो आई विश के I will move in a direction where this sense of despondency to an extent that frustrates me and depresses me. Sometimes as humans we do tend to go that way, but that's the easier route. The most difficult route is to, how do you remain hopeful? So I remain hopeful and optimistic, but I'm very logical and rational in being hopeful also. मैडम मेरा ख्याल है आपने वो नहीं, नजर से नहीं गुजरा। डॉक्टर साहब ठहरिए, 4 क्वेश्चन और है, फिर आपकी तरफ वापस नहीं, मैं बस बात को वाइंड अप कर रही थी, रैप अप कर रही थी। जी जोहा क्विकली, 3 क्वेश्चन और है जी जोहा। Sir, I would like to introduce myself. I'm a student of Economics Academy, University Islamabad, and I'm a 20-year-old girl, so I'm quite worried about my future. And forecasting also an area of interest. तो मैं आगे जाके भी इस पे रिसर्च बकायदा करना चाहती हूँ। तो दो क्विकली मैं आपसे बस ये कहूँगी कि जैसे हम बात करें कि टेक्नोलॉजी की, तो बात ये है कि आज से डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज में टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन का जो पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट है। जैसे पाकिस्तान में एआई उस तरह से इंटीग्रेट नहीं हो सकती, हमारे पास उस तरह से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नहीं है, हमारे पास कैपिटल ये प्रॉपर डेटाबेस नहीं है एआई को ऑपरेट करने के लिए। तो आज से 50 इयर्स बाद ये जो आप कह रही है कि स्पेस एक्सपीडिशन है और ये वो सब कुछ है, ये क्या सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में ही होंगी या डेवलपिंग में भी होंगी? दूसरी बात ये कि पॉपुलेशन क्या इसी तरह से बढ़ेगी जैसे पहले बढ़ती है? क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो ज्यादा होते जा रहे हैं। काफी सारे ऐसे मुबालिक है जिनके बारे में प्रेडिक्शन है कि वो गायब हो जाएंगे अगले 50 साल, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी एक है। हमें ये भी नहीं पता क्या 50 इयर्स बाद कराची होगा भी या नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो है वो और इवन कुछ ऐसी भी रिसर्चेस हैं जो कहती हैं कि ग्लेशियर्स मेल्ट होने की वजह से जो मिलियन ईयर ओल्ड वायरसेस थे वो भी वाटर के थ्रू जो है ना आ रहे हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है। और एक और ये है कि जो हमारी कैपिटलिज्म में माशाल्लाह जो इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन है कि अमीर अमीर तरह होता जा रहा है, गरीब गरीब तरह होता है, जैसे जैसे दुनिया कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म की तरफ मूव कर रही है, तो क्या ये स्ट्रेटिफिकेशन कम होगी या ज्यादा होगी? तो और ये भी एक मेरा है कि जैसे 1984 इज अ वेरी फेमस नॉवल जो डिस्टोपिया के ऊपर लिखा गया, तो जैसे हम चाइनीज फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देखते हैं वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है। तो डोंट यू थिंक कि हमारी जो दुनिया है वो डिस्टोपिया की तरफ मूव कर रही है कि हमारी प्राइवेसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी यही की वजह से, और ये वो सब कुछ? बस यही। पहले तो अगर आप इकोनॉमिक मैट्रिक्स, काफी सारे सवाल हैं, मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट करूंगी कि प्रोजेक्शंस तो जरूर देखें, बट एक और एरिया है सिनेरियो जरूर देखें, बिकॉज इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ रियलिटीज ऑफ द फ्यूचर आर क्रिएटेड।
बट वो सिनेरियोज बनाते कैसे हैं, उनकी टेक्निक्स और मेथड क्या है, वो आप ऑनलाइन जरूर देखिएगा, वो आपको बहुत यूजफुल लगेंगी। आपका जो फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी एंजाइटी है वो रिड्यूस करने में, ठीक है। दूसरा ये है कि बिकॉज देन इट विल हेल्प यू क्राफ्ट योर ओन फ्यूचर, सो यू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। आई मीन अ डेस्टिनी इज नॉट हैंडेड ओवर टू यू। तो वो तो सिर्फ बेचारे अब अगर हम स्लेव्स नहीं हैं तो डेस्टिनी हमें नहीं मिलेगी, हमने खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो जरा सोच लें कि वो क्या है आप अभी। दूसरा मल्टीपल, सो you know there are give and takes. If you So for countries that have decided to be in a future place of their own choosing and their own making, will perhaps be okay with their freedoms being limited. Societies और countries that have chosen a very different future, हो सकता है कि उन्होंने अपनी political setup को उस तरीके से नहीं वो reconfigure करें जिससे उनकी liberties control में आएंगी। So it depending on how you have crafted a future for you, you need that political setup, and there has to be some give and takes in order to allow for it to happen, because things therefore then needs to move according to a set plan. और क्या इनके सवाल थे? एक तो इनका खुद का एंजाइटी हो गया, एक आई एम फॉरगेटिंग। जोहा बेटे, अगर आपको अपने बाकी एक आपका पॉलिटिकल वो बता दिया कि ये सेटअप, एनी अदर एक मैं पॉपुलेशन की बात कर रही थी कि पॉपुलेशन क्या इसी तरह इंक्रीज हो गया। दूसरा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी अगर आपने शुरू में सुना हो, आई थिंक वो शुमाया जिन्होंने बोला था कि जो क्लाइमेट इफेक्ट है, सो यू सी जो आपकी पॉपुलेशन की जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसमें इतने ज्यादा लोग मरते नहीं है, बट वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। या फॉर इंस्टेंस आपका जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज होता है, अफगानिस्तान में वॉर होती है, कुछ होता है, सो यू गेट अ लॉट ऑफ रेफ्यूजीज कमिंग इनटू पाकिस्तान। सो व्हेन यू look at it from in terms of the changes in population and the balances, you've got to understand it in different scenarios. So what will so happen? लेकिन अगर अभी कराची की एग्जांपल लें, जो मैंने एक्चुअली मैप भी यूज किया था अपनी स्लाइड में, वो कराची का ही मैप था। अगर आप कराची का एग्जांपल लें तो वो अब जो है, इफ यू लुक एट इट्स न्यू रियल एस्टेट डेवलपमेंट, इट इज हैपनिंग अवे फ्रॉम द कोस्टल लाइन। सो जितना आप बहरिया अभी नया जो बन रहा है वो देख रहे हैं, वो दूर बन रहा है, वो कराची से मतलब जो मेन एरिया उससे दूर। सो इट इज अ रियलिटी कि देयर इज इरोजन ऑफ लैंड, बट दैट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू पाकिस्तान, इट इज अ ग्लोबल फिनोमेना। How people plan, how people survive, all of that goes into like what level of planning is going in. So far, I mean, you can rest assured कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं तो उसके accordingly move भी कर रहे हैं। So we're not going to have so much of displacement as we may sort of imagine. ठीक जी, डॉक्टर हाशिम और फिर ऐना और फिर इमरान, 3 क्वेश्चन है सो फार। जी हाशिम जी जी, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, तो मेरा सवाल था कि ये ये बुक है मेरे पास, ये जो नो हरारी साहब ने लिखी है होमोड्यूस, उसमें डॉक्टर साहब उन्होंने 2 चीज़ों पर बड़ा फोकस किया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी फ्यूचर में, लॉन्ग फ्यूचर में जाकर बहुत ज़्यादा इंसानी ज़िंदगी को मुतासर करने जा रही है। बायोटेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो हमें समझ भी आती है क्योंकि ये पोस्ट कोरोना इरा जो है वो सारा ही तकरीबन आईटी बेस्ड चला गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चला गया है। तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आप किस तरह देखती हैं कि ये फ्यूचर को किस तरह मुतासर करेगा? See, if you look at it, that's a very important question. If you look at it in a combination of the two things, information technology and biotechnology as a combination, but you have to also look at it in terms of how would it benefit me. So for instance, अगर मेरा कोई genetic disorder है जो मेरी family history से चला आ रहा है, and by tweaking of certain genome, I could be assured कि मुझे वो ailment नहीं होगी, तो बहुत सारी वो इस तरीके से आप डिजीज जो है इस तरीके से आप खुद ब खुद ही आप इसको कन्फिगर कर सकते हैं। सो वो इंफॉर्मेशन, मेरा जो डीएनए है, इट्स एन इंफॉर्मेशन पैकेट। दैट इंफॉर्मेशन पैकेट कैरीज
a history of data set that has come through generation. वो अब कोई भी एलिमेंट होगी वो एक जनरेशनल फिनोमेना भी है, वो एक एनवायरमेंटल फिनोमेना भी है. तो जो जनरेशनल फिनोमेना जो आपके जीन में आ रहा है, बायोटेक्नोलॉजी एंड मिक्सचर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन एज उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग जो आप कहते हैं जिसको, तो वो आप उसमें उसको बहुत हद तक आपकी जो legacy wali bimariyan hoti hai na, you can actually manage those things. There are countries who are aggressively mining that information of their own citizens through their वो बेशक वो biometric, वो blood sample, वो आपका DNA mapping. So DNA आपका जो gene mapping है, these are really nationwide healthcare programs that have been integrated in all of that. But those are countries that know कि जी हमने जो है अपने healthcare solutions जो है अगले 50 साल के अंदर अंदर इस तरीके से देने हैं. ठीक जी है ना. Thank you so much. Since I'm working as well, I don't know if the question has already been asked. Lekin taking it up from Zuha's discussion, so you do not need to worry because humans are, they evolve and they are very much, into bearing all the things. Lekin since we are talking about scarcity, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि in the West, I would like to speak about the abundance point of view. यहाँ पे because इनके भूख के मसले खत्म हो गए हैं and I don't think कि कभी कहत यहाँ आएगा, and they are going to poetry classes. Yesterday there was a salsa class going on in City Hall, and people are going for skydiving. लेकिन again, because I work as a legal data analyst, so believe me, I have read the legal documents from 1938 that talk about food temperature in the stores, how far behind we are in order to cope up with that, and also how will fast fashion impact our climate change. Because मैंने ये देखा है कि यहाँ पे in the West, we don't really care about what someone is wearing. Of course, there are very brand conscious people as well, but they will like to go for a very high-end brand, but not like holding. They go for quality over quantity. यहाँ पे with fast fashion, we have seen कि नया fashion आ रहा है, everything, and all the stuff. What will happen to that in future, if you can answer that? I know this is all speculations because we do not have any data to back it up, because I have also shared 2 links in the chat as well. One is from the predictions from 1900, which were very wild, and one are those which actually came true. So it's just that if you can answer this question to the best of your abilities, I'll really appreciate that. Thanks. So very quickly, Anna, conscious living is a sort of perhaps a fashion statement which is now being dominated in Western culture. We will see that effect coming into a lot of the streetwear. A lot of the streetwear that you find in the West are now incorporating that as part of their ethos, their ethical consideration. ये चीज इंडिया में भी हो रही है, ये चीज पाकिस्तान में भी हो रही है. वो उस स्केल पे नहीं हो रही होगी जिस स्केल पे आपको लगता है वो चेंज होना. तो चेंजेस की आइडेंटिफिकेशन रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. You have to really understand that there are still people who are conscious about whether they should carry a handbag which is Chanel ka hai, Louis Vuitton ka hai, kiska hai. And there will be people who would be okay कि एक बहुत ही उन्होंने friendly cloth का उन्होंने एक बैग पकड़ा हुआ है. So in terms of आहिस्ता आहिस्ता you will see कि जिस तरह आप किसी चीज को डिसोन करना शुरू करते हैं, आप किसी थॉट को डिसोन करते हैं, किसी शख्स को डिसोन करना शुरू करते हैं, तो वो अल्टीमेटली आपकी कॉन्शियस लेवल से भी वो हटना शुरू हो जाती है. तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके कल्चर, आपके भी फैशन, उसमें वो चीज इंटीग्रेट हो रही है. वो उस स्केल पे नहीं हो रही, बट वो होते होते वो हो जाएगी. लाइक उसको मैस स्केल पे वो बिहेवियर में, कोई भी चीज को अगर आप बिहेवियर में ट्रांसलेट करते हैं, डोंट थिंक इट्स गोना हैपन इवन ड्यूरिंग योर ओन लाइफ टाइम. Think about at least 2-3 lifetime until you see a mass behavioral shift.
If you see a mass behavior shift, 2 things or 3 things would have happened. Number 1, a major crisis or event has taken place, तो इंसान का attitude और behavior change हो गया. Number 2, कोई इतनी बड़ी डिस्कवरी या इन्वेंशन हो गई है ह्यूमैनिटी से कि उसमें चेंज हो गया है. तो यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड आइदर इट्स अ क्राइसिस दैट रियली चेंजेस समवन और इट्स लर्निंग समथिंग न्यू दैट चेंजेस समवन. सो वो बिहेवियर में आते आते वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इट ऑल स्टार्ट्स एट एन इंडिविजुअल, देन द इंडिविजुअल बिकम्स दैट इन्फ्लुएंस. थैंक यू जी. इमरान वेरी क्विकली यार 2-3 क्वेश्चन और आ गए हैं साथ ही. जी ठीक है सर. जी इमरान. ठीक है सर. पहले तो आपका शुक्रिया, अच्छा सेशन रखा आपने. दूसरा सवाल मेरा मुख्तसर सा है. क्या अगले 50 साल में कोई ऐसा इम्कान है कि इंसान ये सोचेगा कि मरीख और चांद के प्रोजेक्ट्स से बेहतर है कि जमीन पे रेंगने वाले इंसानों के लिए रोटी का बंदोबस्त किया जाए? इमरान, ये तो सवाल आज भी सोच रहे हैं, तो ये अगले 50 साल की तो जरूरत भी नहीं है. ये 50 साल पहले भी ये चीज सोची थी. सवाल सिर्फ ये है, has there been a moment in time where you were left hungry? So that is an important question. And how do we solve that issue? वो हो सकता है चांद पे जाने से भी आपको एक तरीकेकार होता है, जिंदगी को देखने का तरीकेकार होता है. एक होता है कि आप सिर्फ शीशे में अपने आप को देख रहे हैं, ठीक है ना. फिर आप अपने आप को जो कॉन्स्टलेशन है, जो स्पेस है, उधर से अपने आप को देख रहे हैं. तो जब आप अपने आप को देखेंगे, स्पेस से अपने आप को देखें, तो एक तो आप नजर भी नहीं आएंगे, ठीक है. तो हमारी हैसियत उतनी ही इनसिग्निफिकेंट हो जाती है. तो आपको देखना है कि आप कितने सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है, कि जो सिर्फ आपके बारे में सोचा जाए. आपको सोचना है कि पूरी दुनिया को अगर कायम रखना है, ठीक है, और उसके निजाम में बेहतरी लेकर आनी है, तो उसके लिए अगर मुझे मरीख और चांद पे जाना पड़ेगा तो जाना चाहिए. उसके लिए वो एज अ कॉन्ट्रास्ट नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए कि ये भी करना चाहिए साथ में. मुझे ये समझ आई है कि कोई इम्कान नहीं है. ठीक हो गया. चले ठीक है, जो भी आपको. वो किसने बोला था पिछले दिनों में, परवेश, कि जो मैंने कहा आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, जो आपने समझा यू आर रिस्पॉन्सिबल. आपकी ये मैंने चीज ना दिमाग में सीख ली है कि हमने तो बोल दिया जी, हमें तो अपना कॉन्टेक्स्ट का पड़ता है. आपने जो समझ लिया वो आपके ऊपर है. मतलब वो आपकी मर्जी है, वैसे भी वो आपकी मतलब आजादी भी है ना. अच्छा जी, गौरी साहब. और गौरी साहब के बाद डॉक्टर राहत, चूंकि हाशिम साहब पहले कर चुके हैं, और उसके बाद मैं डॉक्टर हाशिम पे वापस. जी गौरी साहब, वेरी क्विकली प्लीज. सर अस्सलाम वालेकुम. मेरा क्वेश्चन सर ये है कि एग्रीकल्चर इज अवर कल्चर. हमने इसको इंडस्ट्रियल कल्चर में तब्दील करना चाहते हैं, तो हमें कौन कौन सी बिग पुश थ्योरीज के तौर पे रेमेडीज चाहिए कि हमारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल कल्चर में तब्दील हो जाए? जी आई एम सॉरी, ये इंडस्ट्रियल कल्चर में तब्दील हो गया या हो रहा है? आई मीन नहीं, वो कह रहे हैं क्या करना पड़ेगा इसके लिए. आई थिंक वो ऑलरेडी हो तो रहा है. कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बहुत हद तक हो भी चुका है. there are big companies that are now, there are schemes going around for cultivating new lands and everything. So I mean, in terms of bringing new technology into it, then you've got to say कि urban farming कैसे करेंगे हम. अर्बन फार्मिंग से मुराद है कि मैं अपने घर में अगर वो कल्चर इंट्रोड्यूस करना है कि how am I, my household as a unit, how can it be self-sufficient and not be reliant on the mass agriculture produce. So urban farming is a phenomena which is obviously will take time, but it is something that I'm not someone who is well equipped to answer this. ठीक, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर राहत जी. डॉक्टर राहत, बहुत शुक्रिया. एक तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस फोरम को ज्वाइन करने का मौका दिया. इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा लगा. एक छोटा सा कमेंट है, या इसे जैसे भी आपने पूरे सेशन में जो क्वेश्चन आंसर सेशन था उसमें हमने स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात की. थोड़ी सी मुझे मायूसी हुई और थोड़ी सी तकलीफ भी हुई
क्योंकि अगर हम स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वो नहीं है। जहां से मैं पाकिस्तान को देखती हूँ तो वहाँ मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज में लैक है। तो अगर हम इस स्कैर्सिटी से हटके थोड़ा सा मैनेजमेंट की तरफ ध्यान करें, द रीजन इज कि हर साल सैलाबों में कितना पानी वेस्ट होता है, अगर वो पानी मैनेज होना शुरू हो जाए तो हमारी एग्रीकल्चर ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। तो थोड़ा सा चेंज ऑफ लेंस पे अगर हम फोकस करें तो दैट कैन ब्रिंग वेरी प्रोडक्टिव रिजल्ट्स। तो अगर इस पे कुछ कमेंट्स हो, आई विल बी ग्रेटफुल। I think Dr. Raj really got that very. So हमारे यहाँ जो है ना, हम ये सोचते नहीं है लेकिन हम बात कर जाते हैं। कभी आप देखें कि हम अपने घरों में कपड़े कैसे धोते हैं, गाड़ियां कैसे साफ करते हैं, तो फिर बात करते हैं पानी की किल्लत हो गई है। So we have to really understand कि ये पानी is more like a behavioral thing that we have, and you're absolutely right. Mismanagement of resources, bad. I mean, I wouldn't call it bad governance, but really not being held accountable. आप अपने घर में कुछ करते हैं, आपका छोटा सा बच्चा आपको accountable ठहरा देता है, लेकिन जो in positions of power and leadership है, I mean, over a period of time, the instruments to hold people accountable has been weakened, and therefore वो freedoms आपकी curtail यहाँ हो रही है कि आप किसी को accountable ना ठहरा सके। तो ये सबसे बड़ा कैजुअलिटी है इस पूरे सिस्टम में, वो अकाउंटेबिलिटी इज द कैजुअलिटी। ठीक, बिल्कुल ठीक। जी हाशिम साहब। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो हमें स्टूडेंट्स को गाइड करना होता है फ्यूचर के हवाले से भी, फ्यूचर कैरियर के हवाले से भी। अच्छा मैम, मेरा सवाल फ्यूचर के एतबार से ये है कि हम खुद भी और फ्यूचर के जो यंगस्टर्स हैं उनके हवाले से क्या देखते हैं कि इनको कौन सी स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए कि वो आने वाले जो 50 साल के जो चैलेंजेस हैं उनको मीट कर सके, उसके लिए कौन कौन से स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए? ओके, एक तो बहुत इम्पोर्टेंट जो स्किल सेट है जिसको हम कंप्लीटली, क्योंकि हम उसको सॉफ्ट स्किल कह देते हैं बिकॉज वो हमें लगता है कि वो सॉफ्ट स्किल है, लेकिन जब से आंख खुलती है तब से वही काम करते हैं। इस हमें कम्युनिकेशन जो है जिसको हम सॉफ्ट कहते हैं इज नॉट रियली सॉफ्ट, it's a very hardcore skill. You need to have the ability to communicate. So जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं आप उनको ये जरूर इंकरेज करेंगे जी अपनी कम्युनिकेशन बेहतर की जाए। आप कम्युनिकेशन सिर्फ सुनाने का आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपने निगोशिएट करना है, आपने कन्विंस करना है, आपने अगले का डिसीजन मेक करना है अपने हक में। तो कम्युनिकेशन इज एट इट्स हार्ट, it's the single most important skill set to be completely aware of how to use it, when to use it, why should it be used. So एक तो ये चीज है। दूसरा फिर आपकी टेक्निकल स्किल्स में तो बहुत सारी आपकी लिखने का तरीका, आपका टेक में अगर आपको शौक है तो AI के ऊपर फोकस रखें, बिकॉज इफ यू स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंसेस AI would also help you in terms of really making sure कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है ना, मतलब स्किल सेट तो ऊपर नीचे होती रहती है, कभी आप मशीन लर्निंग, कभी आप पाइथन सीख लें, कभी आप फलान लैंग्वेज सीख लें, लेकिन जो एक चीज है कि द एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग थोड़ा सा चेंज करें, विच इज परहैप्स के you need to understand कि you need to be learning as a continuous effort till the day you die. So the one thing that you can do with your student is that कि उनको encourage यही करें कि जितना सीख सको समझने के साथ साथ उतना सीखते जाओ और उतना समझते जाओ, क्योंकि जितनी ये दोनों चीजें होंगी आपके 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 टूल किट में, उतनी आपके में क्लैरिटी आएगी। And clarity is the absolute outcome that one needs to pursue when one is learning. ठीक जी शुमाइला, and this is the last question. अच्छा मैम, मेरा ये सवाल पता नहीं आपको कैसा लगे सवाल मेरे ऐसा भी ज़हन में लगे शुमाइला आप कर दें, आपको ये हाँ मसला ही नहीं। हाँ, ज़हन में आ रहा था तो मैंने कहा क्या कोई ऐसी कोई ऐसी कंट्री है जिसको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान से 50 साल आगे है,
मतलब मेरा एक भाई है, मेरी उससे बहस होती है, वो कहता है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, वो कहता है हम आपसे 50 साल आगे हैं। तो मैंने कहा क्योंकि 50 साल बाद मैंने तो जिंदा नहीं होना, तो मैं फिर वो पाकिस्तान जो 50 साल के बाद होना है ना, उसको देखा हूँ जाके वो कैसा है। ये जबरदस्त। जो हम हमें ये सिखाया जाता है, हमारी ट्रेनिंग में होता है कि आप जिस पॉइंट पे खड़े हुए हैं ना, आपको अपना माजी, अपना मुस्तकबिल और अपना आज सब कुछ नजर आ रहा है। तो जो आपकी विजन है ना, वो आपको लग रहा है कि 50 साल आपको डिफरेंट नजर आएंगे। तो जो बंदा चांद पे बैठा हुआ है ना, उसके 50 साल डिफरेंट होंगे। तो जाहिर सी बात है, भाई साहब अगर ऑस्ट्रेलिया में है तो उनके 50 साल डिफरेंट है। हमारे 50 साल में तो सवालात ही वही है ना, कि देखो अगर फूड क्राइसिस हो गया, वाटर क्राइसिस हो गया, आई मीन उसके 50 साल के सवालात सुनेंगे, वो डिफरेंट होंगे। वो सोच रहे होंगे मेरे पास परसों ये वाली जॉब जो है कोई रोबोट ना कर ले। मतलब उसका जो लैंडस्केप है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। सो अपने आप को किसी मुस्तकबिल में सोचना इज अ मैटर ऑफ परसेप्शन एंड कंडीशन। सो यू चेंज द कंडीशन, द परसेप्शन अल्टीमेटली आल्सो अडैप्ट्स। चले जी, परयूष, ठीक बोल रहा हूँ फिर? मैंने याद कर लिया। अच्छा, मैं आपसे बिल्कुल इससे हटके, सवाल तो एक दो है लेकिन मैं वो अब नहीं करना चाह रहा, वो काफी टाइम भी लेंगे और वो थोड़े सीरियस भी हैं। बिल्कुल एक नॉन सीरियस सा क्वेश्चन। आपने बात की थी एक अपॉर्चुनिटी की, एक मोमेंट की, जिसमें मतलब यू हैव टू डिसाइड कि भी आपने क्या करना। अच्छा, मैं आपसे ये पूछा, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आपको कॉल आ जाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि भाई केयर टेकर कैबिनेट बन रही है और आपको एडवाइजर बनाते हैं, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? इट्स ऑलमोस्ट लाइक अगर कोई नौकरी दे रहा हो तो वही रिस्पॉन्स होता है, यार पैसे कितने मिले। नौकरी है ना, मतलब ठीक उसका हो कोई गया। वो मकसद नहीं है, वो मकसद नहीं है, नौकरी है वो। ठीक हो गया। हम भी ऐसे ही कर रहे हैं नौकरियां, वैसे सारे जो बैठे हुए हैं। मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए, एक मकसद और एक नौकरी में फर्क है। ठीक हो गया। कैबिनेट एक मकसद नहीं है, एक नौकरी। ठीक हो गया। हाँ, ये क्लैरिटी बड़ी अच्छी है, मतलब ये ग्राउंड भी अच्छा बना लिया आपने उसको एक्सेप्ट करने नहीं, ब्रिलियंट। आपको पता होना चाहिए, मतलब आपसे नौकरी करवाई जाएगी ना, मतलब नहीं, उसमें क्या। ब्रिलियंट अभी उसमें ब्रिलियंट, वो आज उसमें में अपने दिमाग इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को लॉजिक दें, अपने आप को मतलब ब्रेन वॉश करके अपने लिए एक प्रेस्टीज क्रिएट करना चाहें, अपनी रैशनल, अपनी रेलेवेंस हाँ, क्रिएट बिल्कुल करना ठीक चाहें, है, बिल्कुल वो तो ठीक है, अलग बात जबरदस्त। है। वो तो कहानी डाल दो, कहीं भी डाल दो। हाँ, बिल्कुल सही। वो आज सुबह कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, सैयदा आरफा ज़ाहरा वो हमारे प्रोग्राम में भी आई थी, तो उनको वो डॉन में उनका नाम आया कि उनको स्पेशल एडवाइजर के तौर पे लिया गया ना, तो मुझे नहीं पता उनका। हाँ, नहीं, वो कुछ लोगों ने सुबह बात कर रहे थे तो किसी ने फिर कहा कि नहीं नहीं, वो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर सबने जो बैठे हुए थे सुख का सांस लिया कि बहुत अच्छा। लेकिन आपने एक बड़ी क्रिएटिव सी उसकी ग्राउंड जो है ना वो बनाई है कि ठीक है, नौकरी है। ये नौकरी कौन सा हम अपनी ख्वाहिश से कर रहे हैं, ये भी नौकरी के तौर पे ही कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये देखिए, ये जो मैं आपको बताती हूँ, ये जो आज आपने आज ये मैं बहुत ही आपके शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज आई टेल यू व्हाट, मैं फ्यूचर्स को इतना पाकिस्तान के लेंस में तो बिल्कुल ही, मैं वो दुनिया के लेंस में तो आदमी देखता रहता है, जहां पर आपको आसानी से कोई एजेंडा सेटिंग में कोई स्पेस मिल जाती है, देन यू डू ब्रिंग आउट योर 200%, राइट? So I'm really grateful to you for actually creating this opportunity where I really went back into my notes and I thought यार मैं क्या फ्रेम रखूं ना, 50 साल का मैं फ्रेम क्या रखूं, और उसमें इतनी ऑब्सक्योर चीज ना हो जो रेलेवेंसी भी ना बन सके ना। तो वो मुझे कोई 2-3 घंटे सोचने का मौका जो मेरे लिए आया मेरी जिंदगी में, वो आपकी वजह से। तो ये नौकरी नहीं थी, ये एक था कि हाँ, बिल्कुल ये ठीक। खुद का एक बहुत ही कॉन्शियस चॉइस से एक ड्रिवन पैशन, एक एक अल्टीमेट आउटकम है, यू नो। And I'm very happy with the level of discussion and the thinking that was involved all throughout. I mean, I can imagine that it's not easy being an optimist and hopeful Pakistani. It's not easy at all, because the sort of curveballs you get
at every instant you are compelled to be depressed. ठीक, And बिल्कुल how do you dodge that is very important. तो ये आपकी मेहरबानी है नहीं, बहुत कि शुक्रिया आपका, आपने हमारी इनविटेशन एक्सेप्ट की, बड़ा मजा आया हमें भी। अच्छा, एक दो चीजें बताइए, तो पाकिस्तान में आपके अलावा और कौन है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, फ्यूचरिस्ट? नहीं, इसमें और जो है ना, हाँ, इसमें एक है उमर शिराज है जो एक यूनिवर्सिटी, मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में है या वो रिसर्चर है। ठीक है, एक वो है, दूसरा एक होते थे डॉक्टर इकराम जक, मुझे याद नहीं है, वो फ्यूचरिस्टिक इंस्टीट्यूट चलाते थे। ठीक, इसके अलावा a lot many people are doing this but not really knowing that they're doing this either, ठीक, right? I ठीक, mean, how do I explain? So then essentially मैं जिनको जानती हूँ वो ठीक, एक दो ही लोग हैं, ठीक, ठीक। और इससे ज्यादा मैं नहीं जानती किसी को। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि फ्यूचरोलॉजी पे कुछ अच्छी बुक्स जो हैं, क्योंकि मैं एक दो लोगों से फेमिलियर हूँ। एक तो एल्वन टॉफलर की पुरानी किताबें हैं, जी जी, फ्यूचर शॉक्स और इस तरह की, और फिक्शन में कुछ काम है इस तरह के। मिसाल के तौर पे वो जॉर्ज ऑरवेल का था 1984, हाँ जी जी, और ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो है, जो उसके साथ बड़ी रेलेवेंस आजकल महसूस भी होती है, हक्सले का जो था। तो इसके अलावा और कोई आप कुछ रिकमेंड कर सकती हैं तो बताइए। To tell you honestly, I mean, I'm more of a student of techniques and methods, ठीक, ठीक, and rather than the student of literature. ठीक, So literature although ये है, लेकिन मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे ना टेक्निक्स और मेथड्स क्या करना है, तो I'll be in a better position and equipped to respond to this. But ठीक वैसे मैं आपको रैंडम नाम थ्रो अराउंड कर सकती हूँ। गर्ड लेनर्ड है, वो अच्छा है। ग्रे स्कॉट है, वो अच्छा है। हमारे पास मैं उनका नाम भूल रही हूँ, एक मुस्लिम स्कॉलर ही है, वो उनका नाम यार मैं भूली, मैं आपको भेज दूंगी उनका नाम क्या है। उन्होंने इस्लाम फ्यूचर्स के ऊपर लिखा हुआ है। तो देर आर फ्यू पीपल, आई मीन, हम हर किसी को कहते हैं इब्ने खुल्दून पढ़ लो यार, मतलब हमने अगर होराइजन में बातें करनी है और टाइम साइकिल्स में बातें करनी है तो उसमें कर ले। सो वो डायमेंशंस दे देता है कि कौन से डायमेंशन से चीजें करनी चाहिए, वरना मूवीज बेतहाशा मूवीज हैं। आप हर एक मूवी है which is about how a gentleman who is lonely needs AI as a companion, and it's only AI which is an automated voice, right? So sound के through, so sensory capabilities के ऊपर या sensory उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ है, वो मूवीज में ज्यादा इफेक्टिवली शोकेस करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख्याल है कि इसी के साथ आपके इन्हीं कमेंट्स के साथ आपका दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं। तो बहुत मज़ा आया हमें भी, और खुश रहें, सलामत रहें। तो हम आपको किसी वक्त ना यहाँ इस्लामाबाद में इस्लामाबाद रीडर्स क्लब भी हम चलाते हैं। ये तो ऑनलाइन है, वो ऑन ग्राउंड, तो वहाँ पे भी आपके साथ कुछ सेशन प्लान करें। Sounds good, sounds good. तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। Thank you everyone, thank you so much. Thank you, thank you. अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, सलामत। अल्लाह।